Now, hello student. This is video number 3rd, ongoing chapter, Path to Modernization, class 11, History. Now, today's topic, the restorations, 1868. In 1853, the USA sent Commander Matthew Perry. एक कमांडर भेजा था बेटा उन्होंने for Japan. And Matthew Perry is 1794 to 1858, that is the time period, to the Japan to the sign the trade treaties. ठीक है, जो व्यापारिक संधियाँ थी, ट्रेटीज का मतलब तो संधियाँ बेटा, उसको करने के लिए मैथ्यू पेरीज गो टू द जापान फ्रॉम यूएसए. सो जापान ले ऑन द रूट टू चाइना विच द यूएसए सॉ हैज़ द मेजर मार्केट, बिकॉज जापान उस समय बेटा एक मेजर मार्केट, एक हब के रूप में बन रहा था. सो यूएसए आल्सो द वांटेड द प्लेस टू द रिफ्यूल देयर शिप्स इन द पैसिफिक ओशंस. ठीक है, और जापान एंड यूएसए को भी एक ऐसे प्लेस का नीड था जहाँ पे वो अपने शिप्स को पैसिफिक ओशंस में जो उसके शिप चल रहे थे बेटे उनको वहाँ रख सकता था. पेरिस अराइवल हैड इन द इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द जापानीज पॉलिटिक्स. और बेटा इसके बाद उसका अराइवल मैथ्यू पेरीज का जापान के लिए एक बहुत उनकी पॉलिटिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट था. सो ए मूवमेंट स्टार्ट अगेंस्ट द ट्रेड एंड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड द फॉरेन इंटरवेंशंस. और यहीं से बेटा फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ और इंटरनेशनल जो ट्रेड था जो स्टार्ट हुआ. द मेजर रिस्टोरेशन. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजर रिस्टोरेशन? सो इन 1868 ए मूवमेंट फोर्सफुली मूव्ड द शोगुन्स फ्रॉम पावर. अब देखो जो शोगुन्स थे, एम्परर्स के बाद मिलिट्री कमांडर्स, शोगुन्स, हु वाज द शोगुन्स? शोगुन्स इज द मिलिट्री कमांडर्स. सो व्हेन द शोगुन्स रिप्लेस the monarchy system, the emperors, and they took the powers. Now major restoration, according to the major restoration is a movement. क्या था? एक मूव था ऐसा जिसके अंदर according to a movement and start in the 1868 and the forcefully, ठीक है, पावर से, ताकत से, the forcefully remove the shoguns from the powers and brought the emperor to Edo and emperor gained the powers again. Edo, that is the capital, वहाँ पे वापस एम्परर को लाना. डैट मीन्स जो शोगुन्स ने एम्परर्स को रिप्लेस किया, मेजर रिस्टोरेशन के अकॉर्डिंग वापस एम्परर्स को आप पावर में ला रहे हैं. रिप्लेस किसको कर रहे हैं? यहाँ पे शोगुन्स को कर रहे हैं. सो डैट इज़ द मेजर रिस्टोरेशन. बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है डैट इज़ द मेजर रिस्टोरेशन. सो ईडो वॉज द मेड द कैपिटल एंड रीनेम टोक्यो. और ईडो को वापस कैपिटल बनाया गया बेटा एंड उसको रीनेम कर दिया गया. वी हैज़ कॉल्ड टोक्यो. ओके, जो हम कहते हैं ना बेटा टोक्यो, अभी दैट टोक्यो विच मीन्स ईस्टर्न कैपिटल. और टोक्यो का मीनिंग क्या होता है बेटा? ईस्टर्न गेटवे. व्हाट इज़ द मेजर रिस्टोरेशन? तो बॉक्स के अंदर से इसका अलग से हमने डेफिनेशन बना के दे रखा है बेटा. सो द मेजर रिस्टोरेशन वॉज द पॉलिटिकल एंड द सोशल रिवोल्यूशन इन द जापान इन 1868 to 69 which ended the power of Tokugawa shoguns, बिकॉज टोकुगावा से शोगुन्स ने वहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम तक रूल किया था बेटा. एंड रिटेन द एम्परर टू ए सेंट्रल पोजिशन इन द जापानीज पॉलिटिक्स एंड द कल्चर ऑल्सो. नाउ मेजर रिफॉर्मेशन इन द जापान. सो 3 views about the Europe. What is the 3 views of Europe? First, some Japanese scholars and the leaders wanted to learn from the new ideas in the Europe especially. Second, some scholars wanted to exclude the Europeans but ready to adopt their technologies also. Some are used for the gradually and limited opening to the outer of world also. Now we have important point, Foko Yokuchi. Foko Yokuchi, that means rich country, strong army. That is the Japanese word and it's the English meaning rich country, strong army. Foko Kui Kuyo Hoi. द गवर्नमेंट लॉन्च द पॉलिसी विथ द स्लोगन. अब एक स्लोगन के साथ अपना एक नया पॉलिसी लॉन्च किया, फुकोको हुकोही, रिच स्ट्रॉन्ग रिच कंट्री, यानी एक संपन्न देश, ठीक है, रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी. दे नीडेड टू क्रिएट द सेंस ऑफ नेशनहुड अमंग द पीपल्स एंड टू द ट्रांसफॉर्म द सब्जेक्ट इनटू द सिटीजन्स ऑल्सो. सो दे what need for this type of the government in the launch, because they needed to create the sense of nationhood and also among the peoples and also to the transform the subject into the citizens also. Now again the Japans and we discussed the emperor system. Now we have move on starting. ये जो आपका चैप्टर बेटा देयर इज द 2 part. फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस टू जापान एंड अदर द सेकंड पार्ट वी हैव डिस्कस अनदर कंट्रीज, चाइना.
Now again we have move on the emperor system. The new government also the work to the build what they called the emperor system. Officials were sent to the study the European monarchies on which they planned to model their own also, and the emperor would be trade with revenues as he was considered a direct descendant of the sun goddess. ठीक है, ये they have अपोलाइज या अप्रोच करते थे बेटा अपने आप को जैसे सन गॉडेस, ठीक है, बिकॉज यू नो जापान वी आल्सो द कंट्री ऑफ ऑर्गन ऑफ सन, यू नो उगते हुए सूरज का देश, वी आल्सो नोन एज यू नो जहाँ से सनराइज होता है बेटा सबसे पहले इन द कंट्री, बिकॉज यू नो ईस्टर्न जब आप ईस्ट डायरेक्शन में बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंट्री होता है आपका वर्ल्ड मैप में यू लुक सीन इन द योर बुक, तो पहले कंट्री में तो सन रेज सबसे पहले किस कंट्री में आता है, देयर इज जापान. Now, Emperor also the shown he is the leader to the westernizations and his birthday become the national holiday. अब देखो जो emperors थे बेटा उसका birthday has a national क्या बन गया, एक holiday बन गया बेटा. He wore the western style military uniform and edicts were the issues his name and to set up the modern institution also. The military and the bureaucracy were put under the direct command on the emperors also. Now we have some point about Japan education. The imperial rescript on the education is 1890. Urgent peoples to the precious learning. The new school system began to be built from the 1780s. That is the important line written. Schooling was the compulsory for the boys and the girls and by the 1910. देखिए बिकॉज कैसे जापान अपने आप को स्टेबल कर रहा है बेटा इन द 1910 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम, बाय द 1910 ऑलमोस्ट यूनिवर्सल्स वो सारी जगह यूनिवर्सल्स हो गया. ट्यूशन फीस वर द मिनिमम, ठीक है, बहुत कम लो लेवल पे उनसे मिनिमम उनसे फीस लिया जाता था, द ट्यूशन फीस. द करिकुलम वॉज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल्स बट by the 1817 while the emphasized the modern ideas, the stress was the place on the loyalty and the study of the Japanese history also. The Ministry of Education exercised control over the curriculum and in the sections of the textbooks as well as the teachers training also. What we call the moral culture, मॉरल कल्चर किसे कहेंगे बेटा, सो हैड टू बी द टॉट, ये वहाँ पे उनको बताया जाता था. एंड द टैक्सेस अर्जेंट द चिल्ड्रन टू द रिव्यू दियर पेरेंट्स आल्सो एंड बी लॉयल टू द नेशन एंड बिकम द गुड सिटीजन्स मेक आल्सो. नाउ जापान आर्मी, all young men and over 20 years had to go to parade the military service also. उनको जाना चाहिए होता था बेटा. The modern military force was developed also. Now next point, Japan legal system. A legal system was set up by the regulating to the formation of political group. ये बहुत लेंथी चैप्टर है बेटा थोड़ा सी है. सो एक लीगल सिस्टम वहाँ पे सेट किया, रेगुलेट करना बिल्कुल रेगुलर इंटरवल पे उस पर जज होता है. कंट्रोल द होल्डिंग द मीटिंग्स एंड द इम्पोज द स्क्रिप्ट सेंसरशिप्स. In all these the measures the government had to the face the oppositions and this meant that even after the constitution was the enact these the two groups remained outside the control of the government also. So in this video, thank you.